Today we are going to talk about a company and its project which came into India in 2004. This was the largest international private equity fund of around $2 billion. And they acquired around 4,500 acres of land across India. So they plan to have their operations in Delhi NCR, Punjab, Tamil Nadu, Maharashtra, and majority of the launches that they did was in Gurgaon and Punjab. And in fact, when we talk about their land parcels, they had their land parcel located at a very prime locations. They launched their first project in the market in 2009. लेकिन 2015-16 में they struggled with lot of things and they slightly wiped out of the market. और उन्होंने अपने operations को concentrate कर लिया and they were not very much active in the market. In fact, they launched one of the marquee developments of Golf Course Extension Road, Grand Hyatt Residential. So today we are going to talk about IREO Group and one of their developments, that's IREO Corridors, which still have the inventories with the developer and they have around 450 apartments to sell. So IREO came into Indian market with a bang. 2004 में उन्होंने अपने operations को initiate किया इंडिया के अंदर और जो पहला प्रोजेक्ट था they launched in 2009 in Gurgaon with the name IREO Grand Arc. जितने भी वो concepts लेके आए गुड़गांव के अंदर, those were futuristic and that has the architecture of international countries. एक छोटे span के अंदर they launched multiple project. Majorly उनकी जो concentration थी गुड़गांव के अंदर वो Golf Course Extension Road पे थी. They launched their first project as IREO Grand Arch. They launched their another project IREO Skyon. फिर IREO Uptown आया, IREO Victory Valley आया, then they launched their marquee development that's Grand Hyatt Residences. इसी के साथ उन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट IREO Corridors को भी लॉन्च किया. बट इनका जो मेन प्रोजेक्ट था that was IREO Grand Arc जिससे इन्होंने फोरे किया इंडियन ऑपरेशन के अंदर, that still holds the highest appreciation in the market. That was launched somewhere around 6,000 rupees per square feet in 2009 and right now it operates somewhere around 27,000 rupees per square feet in the secondary market. इन्होंने एक और प्रोजेक्ट लॉन्च किया that was IREO Gurgaon Hills, that was on the Gaul Pahadi. So they had a huge scale. In fact, they launched around 23 projects over a short span of time across multiple regions. और जो projects इन्होंने launch करे वो थे residential, commercial, retail, hospitality और plots की development. But after the great success of these projects and a strong position in the real estate market, in fact, they started dominating the Golf Course Extension Road micro market. They stuck with legal issues and allegations and the company seen the downtrend from then. 2015-16 से उन्होंने downtrend को देखना start किया and they concentrated their operations to the developed projects. जो वो बना रहे थे उन्हीं को वो complete करने में लग गए, लेकिन उन्होंने कोई भी नई development को launch नहीं किया उसके बाद. In fact, last year they launched their 2 developments in Sona, which were the plotted developments. लेकिन इसी के बीच में हम उनके एक प्रोजेक्ट के बारे में आज बात करने वाले हैं जिसमें कंपनी स्टिल हैव द इन्वेंटरीज एंड दैट प्रोजेक्ट इज अ राइट वैल्यू अपॉर्चुनिटी फॉर द एंड यूजर इफ दे आर लुकिंग फॉर अ प्रॉपर्टी टू बाय. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट IREO Corridors. सो IREO Corridor इज इन सेक्टर 67. इट्स ऑन द गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड. अगर हम इसकी लोकेशन के बारे में बात करें तो इट इज जस्ट नेक्स्ट टू M3M Urbana, विक्ट्री वैली. ये उसी रोड पे है जिसपे गोल्फ एस्टेट और ट्रम्प टावर पड़ता है और इमार का luxury villa community भी पड़ता है. So the surroundings are high end, the social infrastructure is in place, schools, it's walking distance, so superb location. And now the developer is saying that they are going to sort out the issue of access to IREO Corridor. Now let's dive into IREO Corridors analysis. This is around 37.5 acres of development. It has 3 clusters, cluster A, cluster B, cluster C. In total they have around 27 towers with around 1350 apartments. In cluster A they have around 10 towers, in cluster B they have around 8 towers, in cluster C they have around 9 towers. This project was launched in 2014. जब इसको लॉन्च किया गया था the price point was somewhere around 8,000 rupees per square feet. लेकिन इस प्रोजेक्ट में बहुत स्ट्रगल किया over a period of time. 2014 में जब ये लॉन्च किया गया था it was a high flyer. ये सेम डे सोल्ड आउट हो गया था. बट एट द सेम टाइम ये जो मार्केट थी 2014 से 2019 तक बहुत स्लगिश रही, तो उसका इम्पैक्ट इस प्रोडक्ट पे भी आया. एट द सेम टाइम IREO एज ए कंपनी ने भी बहुत स्ट्रगल किया बिकॉज ऑफ द लीगल इश्यूज. तो 8,000 रुपए पे लॉन्च होने के बाद ये प्रोजेक्ट 6,500 तक भी गया. नाउ दिस इज ग्राउंड प्लस 13 डेवलपमेंट विद 4 to a core apartment. There are multiple sizes which are available in the development.
The plus point is that these are ready to move in inventory. In fact, resale में भी opportunities मिल जाती हैं 15 से 16 हज़ार के रेट में. जो आईरियो अपने 450 अपार्टमेंट्स लॉन्च कर रहा है वो भी रेडी टू मूव इन इन्वेंट्रीज हैं. तो हमें इन्वेंट्रीज मिलती हैं इसमें 2 BHK प्लस सर्वेंट, 3 BHK एंड 3 BHK प्लस सर्वेंट. सो 2 BHK का जो साइज स्टार्ट होता है दैट इज 1296 स्क्वायर फीट. 2 BHK सर्वेंट इज अराउंड 1500 स्क्वायर फीट एंड 3 BHK के मल्टीपल साइजेस हैं 2017-27 स्क्वायर फीट और 3 BHK प्लस सर्वेंट के साइजेस 1893 स्क्वायर फीट टू 2000 स्क्वायर फीट. इसका जो आर्किटेक्ट था उस टाइम दैट वाज आर्कॉप, वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्किटेक्ट इन द वर्ल्ड, and the contractor that Aireo took was L&T. So the vision of the company was clear. They wanted to deliver a quality product, एक अच्छा प्रोडक्ट मार्केट को देना चाहते थे. अगर आज की डेट में हम दूसरे प्रोजेक्ट्स के साथ कंपेयर करते हैं जो आज लॉन्च हो रहे हैं, तो आज मेजरली FAR जो है इंक्रीज हो चुकी है. जब मेजरली जो डेवलपमेंट्स हैं वो हाई TOD प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें डेंसिटी हाई है, बट दिस इज अ लो डेंसिटी प्रोजेक्ट. 37.5 एकर्स के अंदर ओनली 1300 अपार्टमेंट्स आर देयर. सो उसकी वजह से यू गेट ह्यूज ग्रीन स्पेसेस. इनफैक्ट द क्लब हाउस इज अराउंड 2 acres with 1 lakh square feet of built up club house. इनफैक्ट आईरियो ने अभी क्लब हाउस को अंडरटेक किया है फॉर द रीडेवलपमेंट एंड एट द सेम टाइम वो जितनी भी लॉबीज हैं उनको भी रीडू कर रहे हैं एंड मेकिंग इट एज अ लग्जरी लॉबीज. So they are investing huge money back into Aireo corridors because they have huge stake in this development. अगर मैं ये 450 अपार्टमेंट्स की ही वर्थ बताऊं, that would be somewhere around 800 to 900 crores. कुछ main points that we have to understand in this project is the huge green spaces. The efficiency of the apartments are very high, which is around 80% efficient, which you won't find today in the new launch products. The floor to ceiling height is around 11 feet and the maintenance is being done by JLL, which is an international maintenance company, and the maintenance charges are somewhere around 3 rupees per square feet. So coming on to the pricing, so the pricing of these apartments are starting from 2.3 crores for a 2 BHK apartment, and for a 3 BHK apartment it starts from 3.1 CR. ये range करते हैं from 2.3 CR to 3.5 CR के बीच में, depending on the size you want to buy. The payment plan, if you buying directly from the developer, is 90 days. These are ready to move in inventories. 90 दिन के अंदर आप पेमेंट करेंगे डेवलपर को, आपकी रजिस्ट्री होगी प्रॉपर्टी के एंड यू आर द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर अपार्टमेंट. ऑलरेडी हैबिटेशन इस डेवलपमेंट में आ चुकी हैं. देयर आर लॉट ऑफ फैमिलीज व्हिच आर स्टेइंग हियर एंड द रेंटल ऑफ दीज अपार्टमेंट्स ऑफ अ 2 BHK is somewhere around 40,000 rupees per month and 3 BHK it's around 60,000 rupees per month. And with the redevelopment and the intervention of Aireo management, ये पूरा रिवैम्प हो रहा है इसका डेवलपमेंट का. इसकी जो अपकीप है, इसका जो क्लब हाउस है, इसकी जो लॉबीज हैं, दोज आर इंप्रूविंग एंड गेटिंग इनटू अ लग्जरी मोड व्हिच विल हेल्प द प्राइसेस ऑफ दीज अपार्टमेंट्स टू गो अप. सो इफ यू आर कंसिडरिंग एनीथिंग ऑन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, डू चेक आउट दिस प्रॉपर्टी. इट इज स्टिल अ वैल्यू बाय. If you want to stay, I think the location is superb. The overall development of 37.5 acres, that's a huge development with huge green spaces, with huge sports amenities and a big clubhouse. The efficiency of the apartments are very good. The only negative of this product is the access to the community right now, but the Aireo is improving that also, and in a span of time that will be improved. So do connect with us if you are considering to invest on Golf Course Extension Road or looking for an apartment for your own stay on Golf Course Extension Road. Aireo Corridors can be one of the place which you can consider. I, Saurabh Duggal, with the experience of around 20 years and have worked with multiple developers at a leadership level, as you can see on the screen at my LinkedIn profile, I think we might be able to give justice to your buying process of your home. So do connect with us. Our team would be happy to assist you.